submitted even एक second. on the last date of Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the parliament, did you write to the speaker whether he would allow your request or not is a separate thing? Lord, it's not did me. you write to the speaker? No, my Lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your lordships to... I'm asking you a simple question. You didn't write to the speaker. My Lord, we are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Assembly Speaker? You would write to the registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My Lord, please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. One thing so please argue your own case. Forget what the newspapers say. You argue your case. My Lord, this is not my case. It's not the individual's case. This is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items... Please, again you have assumed yourself... Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My Lord, we don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. My Lord, 184.3 proceedings, as a matter of fact, are meant for two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights for that matter and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at PAL. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say, very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, Madam. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please tell us what are those. Many years ki, now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is why ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए ये encroach हुई the area which is within the jurisdiction of this honorable court. Trichotomy जो है, that is being, as a matter of fact, negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one limb of the state,
that is out of the three, executive, parliament, and the judiciary. When the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and your lordship would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your दे दीजिए. मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का जो केस था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है. तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते हैं, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा. डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का केस जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है. तो ये बात आपकी कहना कि तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आर्मी तरमीमी एक्ट बन गया होता तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? अदालत देख सकती है. तो फिर ये आपका आर्गुमेंट तो खत्म कर रहे हैं आप खुद ही. नहीं, फिर आप आर्गुमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया जी. मैं गुजारिश ये करूं कि ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सर्टेन. नहीं, वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात. अब वही आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज होते हैं जी. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुड बी. तो ये फिर हल नहीं है इसका. आप फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम से आ जाए तो ठीक है. आप कहते हैं हो ही नहीं सकता है, फुल स्टॉप. देखिए, मैं चाहे परमीमी तरमीम करो या आप कानून बता. मैं ये गुजारिश करूं, इस वक्त ये इनेक्टमेंट जो है एक्ट 17 ये इन क्वेश्चन है. अब ये कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या करती है और किस तरह से कानून साजी करती है, ये तो सवाल आएगा एट द टाइम व्हेन सर्टेन लेजिस्लेशन दे आर बाय द पार्लियामेंट. इस वक्त तो इस एनेक्टमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि इसमें आपकी इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके अलावा आपकी जुरिस्डिक्शन 184(3) और उसमें ऐड कर दी गई अपील भी. तो ये और आखिर में जब ये कहा गया कि कोई कानून, कोई प्रेसिडेंट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन किसी तरह से भी ये जो एनेक्टमेंट है इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मैंडेट से निकलकर जुडिशरी का जो डोमेन है उसके अंदर दाखिल हो गए. सो माय सबमिशन. अगर आप एक बात पे मजीद रोशनी डालना पसंद फरमाएं. जी जी. जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं, ये अदालत की आज़ादी अज खुद एक नायाब चीज़ है या अदालत की आज़ादी लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है? इसलिए अदालती आज़ादी क्या खुद एक, जैसे अंग्रेजी में कहें, स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें हर हालत में उसका दिफा करना चाहिए. ये अदालत की आज़ादी को इसलिए दिफा करना चाहिए क्योंकि अगर अदालती आज़ादी नहीं होगी तो अवाम व ख़ास के जो मसाइल हैं उनको आज़ादाना तौर पर नहीं सुना और तय्युन किया जा सकता है. तो आप सिर्फ रुक रहे हैं एक बात पे, अदालत की आज़ादी, मगर आप उसको जोड़ नहीं रहे हैं आगे वाली बात को. तो या तो कहें कि हाँ अदालती आज़ादी खुद ही एक
है उसका मौक़िफ़, उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 184 आप मेरा सवाल बात समझ जी, गए? समझ इस पे ज़रा रोशनी डालिए। जी, बिल्कुल समझ गया। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अदालत बज़ाते खुद अगर फ़र्ज़ करे तश्कील दे दी जाए और उसकी जो फंक्शंस हैं उसके साथ जो रिलेटेबल एरिया है वो अगर उसका हिस्सा नहीं बनता, यानी अवामुन्नास और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ को एनफोर्स करने के हवाले से, तो दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर सो फार एज 184(3) इज़ कंसर्न्ड। सो मेरी गुजारिश ये है, मैं समझा नहीं, एक्सेस टू जवाब जस्टिस। आपका क्या है? आप क्या फरमा रहे हैं? मैं समझ मैं नहीं ये पा कह रहा रहा हूँ। हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस जो है, नहीं, अदालती आज़ादी ये खुद ही हदफ है या कोई और भी मतलब इसका होना चाहिए? मैं ये गुजारिश करूँ कि अगर मुझे इजाज़त दें तो फिर मैं इसको एक और पैराए से आपके सामने रखता हूँ। हाँ, देखिए, आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को डिफाइन करता है और उसमें जुडिशरी नहीं है। इसी तरह स्पेसिफिकली 184(3) जो है, जिसमें 199 की वर्च्यूज भी बाकायदगी से मौजूद हैं, इन दोनों को अगर देखा जाए तो फिर ये एक जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू की जो है वो क्रिएट होती है फॉर द पर्पज ऑफ लुकिंग। चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। अगर कल पार्लियामान एक कानून बनाती है कि बेवाओं को के केसेस को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, ये पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है जब तक आप इसकी ज़्यादा वजाहत ना कीजिए। या तो कहिए जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे जिसको तरजीह देना चाहें। इस वक्त जो आपके सामने इशू है, नहीं, ये मैं आपसे सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, सिर्फ आप आज़ादी अदलिया की बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे कि इसको आप उसके साथ जोड़ नहीं ले रहे हैं कि लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के नुकसान के लिए। तो फिर तो समझ आएगी कि अगर लोगों का नुकसान हो रहा है, हम इधर बैठे हैं लोगों को केस करने के लिए ना। तो अगर कोई चीज़ रास्ता हमवार कर रही है या रास्ता रोक रही है लोगों को इंसाफ दिलवाने में, तब तो आप दलाइल दें। मगर आप सिर्फ कहें क्योंकि ये हकूक़ वो पामाल कर रही है पार्लियामान अदलिया का, तो बस यही ख़त्म है, इसी पे कानून दम तोड़ देगा। मैं गुजारिश ये करूँ कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, नहीं ना कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप कह रहे हैं ये सिर्फ खुद ही काफ़ी है या इसको जोड़ना है किसी चीज़ से, ये बताइए। ये मैं गुजारिश करता हूँ, यही तो मैं अर्ज करने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अलॉट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मेरे साथी ने मुझे रोक लिया, मेरे साथी ने मुझे ही रोक ये लिया। सारी बातें हो चुकी हैं पहले तारिक साहब के होते हुए, ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, उनसे हमने क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे जवाब आ भी जाएंगे। आप अपनी जो पिटीशन है 20 उसके हवाले से आपने बता दिया कि फलां 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 जो ये सेक्शंस हैं ये एटावारी यही कह रहे हैं ना। जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए अपनी पिटीशन के हवाले से। अभी जवाबात की तरफ ना जाइए कि आपने ये क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब उसको छोड़ दीजिए, वो जवाब वो देंगे तो देख लेंगे। आप अपनी जो पिटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आर्गुइंग बिफोर अस, उसके बारे में बात कर लीजिए, बस ठीक है। मैं ये गुजारिश करूँ कि बुनियादी तौर पर जो सवाल जो पॉइंट्स मैंने एजिटेट किए हैं ये और जो सबमिशन का हिस्सा ही हैं, अगर इजाज़त दें तो ये मैंने इसको मुख्तलिफ जो इसके डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स हैं उसमें रखा और बात करके उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कपल ऑफ पैराज फ्राम ए के ब्रोहिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुख्तलिफ हवालों से अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा। आई बी जस्ट मेकिंग अ सबमिशन ऑन दैट। जजमेंट्स माय लॉर्ड, इफ योर लॉर्डशिप मे जस्ट परमिट मी, 2A के हवाले से बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका, वो बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये सारा, और ये इस सिलसिले में मैं PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 595 इसका सब हेड B है सर, पेज 596 एंड सब हेड M पेज 604, और उसके बाद
2015 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1739, इसका सब हेड जो है डी है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे मैंने आर्टिकल 239 का हवाला दिया कि ये बार करता है ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट और उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, एज आई सबमिटेड लॉ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैंने जो जजमेंट्स देखी आपकी इजाज़त से, पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी। 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 751, देन पीएलडी 1994 सुप्रीम कोर्ट 105 and PLD 2000 Supreme Court 869. आइटम 55 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल में, शेड्यूल का हिस्सा है फेडरल लिस्ट का, लेजिस्लेटिव लिस्ट का। आइटम 55 जहाँ एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे तज़किरा है, लेकिन ये जो इनेक्टमेंट है इसने सुप्रीम कोर्ट के, मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर सलब किए हैं इख्तियारात और उसको अपनी गिरदाब में ले लिया है, विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैनर। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा। पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इसका सब हेड ओ है पेज 409 पे और सब हेड आर है पेज 412 पे। ट्राइकोटमी पे सेपरेशन ऑफ पावर, पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 265, इसका रेलेवेंट है सब हेड ए एंड सी। एक्सेस टू जस्टिस पे पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट सब हेड सी पेज 1202। पेज कौन सा बता रहे हैं? पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 923 सर, ई है इसका सब हेड। इंटेंट्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जजमेंट 1992 1992 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1202, इसका रेलेवेंट सब हेड है सी। Interpretation of Constitution approach in different judgments, where they say Constitution to be read as a whole, not one part. ये PLD 1999 Supreme Court page 57, इसका relevant subhead है H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888, इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है? जी that's correct my lord, 888 जी। इसका at page 905 subhead H, already PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 रेफर किया है, इसका सबहेड C at page 598, and again PLD 1992 Supreme Court 595.
Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. ये मैंने एक फोल्डर आपके लिए भी ये जरा दे दीजिए. इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं, नहीं जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की, मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स, जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दें तो चौधरी साहब बड़ी मेहनत की आपने. जी, आप माशाल्लाह. आपकी तवज्जो के लिए से. नहीं, शुक्रिया. अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. ये पेज 14 ये पे पैरा 10 है. इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो पैरा 10 है. पहले सफ़ा बता दें. 14A 14A. 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है. 14 के बाद हमारे पास 15 है. 14 मेरे पास चलिए, नहीं है. ये पैरा 10 है, जरा देखिए. मेरे पास नहीं, मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है. शायद रह गया हो. पेज 18 पे है, ये पेज 18 पे है, पैरा 14 इसमें जो बुक का है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. पैराग्राफ 10 मिसिंग है. आपने 14A इसमें रखा नहीं, मेरे वाली में पता नहीं, मेरे साथ के पास है. किसी के पास मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए उसमें. चलिए आप वो रह गया है तो वो वाला हमें दे दीजिएगा. एक सफ़ा रह गया है, ये मैं दे दूंगा. ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं. आप जरा माइक के करीब आ जाए. ये सब माइक के करीब. 27 पे. हाँ, 27 है पेज 23 पे. हाँ जी, 23 पेज. जी फरमाइए. यह है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर. 23 पेज पे 23 लास्ट पैराग्राफ. 23 और लास्ट पैरा. ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है. ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं. The judiciary department is the proper power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation of interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it and regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislative power would be fruitless if the constitution provisions were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया.
28 पार टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा ये देखिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल ही जी ये जो अल्फाज का चुनाव है ब्रोई साहब का, जुडिशरी डिपार्टमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़, मैंने भी जरा एक सेकेंड, द जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट टू डिटर्मिन वेदर अ स्टैट्यूट बी और बी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटर्मिन। ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है। ये बिल्कुल जुमला ये वेरी जरा- रिस्पेक्टफुली चौधरी साहब, मुझे भी ये जुमला साहब, इस हद तक अच्छा नहीं लगा। चौधरी साहब, आपने तो हमें मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट का। उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया बीच चौधरी साहब, हम तो तो फिर आप सेपरेशन ऑफ वो पावर चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे चौधरी सामने। साहब, वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर, जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। जी दुरुस्त। क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली मट वाच already flown under the bridges, I would not say so because जितनी जजमेंट उसके बाद आई, उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वकील साहब जरा here please. This book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958. मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958. जी जी This book predates martial law. मैं It was I think Broi Saab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law. But it has become his magnum opus, rightly so. But it was published prior to martial law. that's correct It has मुनव्वर nothing to do. जी मैं गुजारिश करूं आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए। ये ब्रोई साहब के अल्फाज नहीं है, ब्रोई साहब इज जस्ट कोटिंग समवन। दिस इज चांसलर केंट आई थिंक। जी अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन American कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जी। की इस्तिलाहात हैं। वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के, ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional वही law. से हमने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये calling regarding it, government capital G means the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume This so is and so, Philadelphia, बुनियादी Yes, तौर पे because उन्होंने he's quoting अमेरिकन someone. जजमेंट्स भी साइट की। देखिए चॉइसा, बिकॉज इज कोटिंग समवन ना, तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है। जी दुरुस्त बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू elaborate the concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने ये सारे लॉज जो है, ये मेडिसिन वाला आगे हमारे पास ये इसका भी तस्वीर हमने रेफरेंस देख दिया ली है। है। ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए। जी जी पैरा 28 जो है, Power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट। When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign That ordains and that ordains and establishes the Constitution is the people, but this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity,
declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign. Will, which having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, this is bill, and that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, perhaps how, but if the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक section है, वो आपने अभी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, ये an applicable fixed for hearing is in a certain manner. I prepared this brief starting from the oath.